So you need to open the chapter number 40. We are going to study here our second story writing, Count Your Blessings. First of all, we will study the given outlines. Let's read. A young boy wanted new shoes. एक लड़का था जो न्यू शूज चाहता था. Pestered his father daily. अपने फादर को डेली पेस्टर करता था, कहता था, बार बार तंग करता था कह के. फादर पुअर फैक्ट्री वर्कर, जो फादर थे पुअर फैक्ट्री वर्कर थे. कुड नॉट अफोर्ड न्यू शूज अफोर्ड नहीं कर सकते थे. वन डे फादर मेड एक्स्ट्रा मनी. एक दिन फादर ने एक्स्ट्रा मनी मेड की, कमाई. बोट शूज फॉर सन, अपने बेटे के लिए शूज बोट किए. सन क्रिटिसाइज्ड शूज, उस बेटे को वो शूज पसंद नहीं आए, उसने उसकी आलोचना की. पुअर क्वालिटी नॉट फैशनेबल, पुअर क्वालिटी के हैं, फैशनेबल नहीं है. लेफ्ट होम इन अ बैड मूड, घर छोड़ दिया एक बुरे मूड में. सेट एट अ बस स्टॉप नियर बाय, अपने घर के पास एक बस स्टॉप पे बैठ गया. फेल्ट गॉड अनफेयर टू हिम, महसूस किया कि गॉड उसके साथ अनफेयर है, सही नहीं कर रहा है. सो अ बेगर बॉय, एक उसने भिखारी एक बच्चे को देखा. ऑन क्रचेस, तो वो अपने क्रचेस पे था, यानी कि बैसाखी पर था. नो लेग्स, उसकी लेग्स नहीं थी. रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर पछताया वो. थैंक्ड गॉड फॉर गिविंग हिम लेग्स, क्योरिंग पेरेंट्स, और गॉड का धन्यवाद किया कि उसने उसको लेग्स दी हैं, टांगे दी हैं, और उसने केयरिंग पेरेंट्स दी हैं. Now, on the behalf of these outlines, dear students, we have to develop a story, right? So we have given here name here, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि अपने ब्लेसिंग्स जो हैं, जो चीज भगवान ने आपको दी हैं उनको देखो, जो नहीं दी हैं उनको ना देखो, राइट? सो लेट्स रीड. देयर वाज ए यंग बॉय हुज शूज वर अ लिटिल वोर्न आउट. एक लड़का था जिसके शूज थोड़े बहुत फट गए थे. He pestered his father every day to buy him a new pair of shoes. उसने हर दिन अपने पापा को कहना स्टार्ट किया कि वो एक नए शूज चाहता है, एक नया पेयर चाहता है शूज का. His father was a poor factory worker who could not afford new shoes. उस लड़के के जो फादर थे वो एक पुअर फैक्ट्री वर्कर थे जो न्यू शूज नहीं खरीद सकते थे. वन डे द फादर वर्कड टिल लेट. एक दिन फादर ने क्या किया, उसके फादर ने देर रात तक काम किया. अर्निड सम एक्स्ट्रा मनी, और कुछ एक्स्ट्रा मनी को अर्न किया. बोट न्यू शूज फॉर हिज सन, और अपने बेटे के लिए न्यू शूज लाया. बट द बॉय डिड नॉट लाइक द शूज, परंतु उस बच्चे को वो शूज पसंद नहीं आए. ही सेड दे वर ओल्ड फैशन्ड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी. उस बच्चे ने कहा कि ये शूज जो हैं वो पुराने फैशन के हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. He grumbled and complained and left home in a bad mood. उसने उसके बारे में शिकायत की, वो कुछ बड़बड़ाया और बच्चा उस बारे में, उस शूज के बारे में, और वो अपने खराब मूड के साथ वो घर से निकल गया. As he sat at the bus stop near his house, he felt God had been very unfair to him by giving him poor parents. जैसे ही एक बस स्टॉप पे बैठा अपने घर के पास, तो उसने महसूस किया कि गॉड उसके साथ बहुत अनफेयर कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने भगवान ने उसको बहुत ही गरीब पेरेंट्स दिए हैं. Just then he saw a beggar boy slowly hobble by on crutches. तभी उसने एक लड़का देखा जो कि बैगर था, और वो स्लोली होबल कर रहा था, वॉक कर रहा था अपने क्रचेस पर, अपने बैसाखी पर. द बॉय हैड नो लेग्स बिलो द नीज. उसके नीज के नीचे, घुटनों के नीचे लेग्स नहीं थी, टांगे नहीं थी, वहीं तक उसकी टांगे थी. द यंग बॉय वाज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर. तभी वो जो यंग बॉय था वो अपने उस बिहेवियर पर, अपने उस बर्ताव पर बहुत अशेम्ड हुआ, शर्मिंदा हुआ. ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट हिज शूज while this poor beggar boy had no feet. उसने सोचा कि मैं अपनी इस शूज के बारे में कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था, और देखो इस ऐसे पुअर बेगर को, इस बच्चे को इसकी टांगे ही नहीं दी भगवान ने. With tears in his eyes, the young boy thanked God. अपनी आंखों में आंसू के साथ उस यंग बॉय ने भगवान का धन्यवाद किया. For giving him legs, उसको टांगे देने के लिए.
एंड feet to walk with, और feet दिए उसको चलने के लिए. He also thanked God for giving him loving parents who cared for his happiness. और उसने भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि भगवान ने उसको बहुत ही लविंग पेरेंट्स दिए हैं. Right? So this is a story. So dear students, the story name is Count Your Blessings, means उन चीजों को काउंट करो, उन चीजों को देखो जो भगवान ने तुम्हें दी हैं, जो तुम्हारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं. Right? So this is story. You have to learn the story. You have to write the story in your fair notebook. After writing in a fair notebook, you should learn and then you should do practice in your practice notebook. You have to write in fair, you have to learn it, and then you have to do practice in your practice notebook, right? Now let's come on the chapter number 14. Chapter number 14, please come on the chapter number 14. Simple present tense. So now, dear students, we are going to understand here about simple present tense. Simple present tense, I go to school by bus. The children speak English fluently. The sun rises in the east. The verbs in these sentences are in simple present tense. So which are the verbs written here? These verbs are the part of the simple present tense. Simple present tense form: first person I, we, second person you, third person they, all plural subjects. Root form of the verb. I pray, we read, we teach, they walk, boys jump. Third person singular, he, she, it, root form of the verbs plus s or es. All the singular subjects, he prays, she teaches, it moves, Johan jumps. So dear students, we have to understand here, in the simple present tense, first of all, we have to write subject, then verb. We have to write first subject, after that we have to write verb, and we need to write the base form of the verb, right? And you know, base form with there are two type of verb that is called first form. One is called without s, second is called with s. So if our subject is third person singular, means he, she, it, or any one name, so we need to use a root form plus s or es. But if our subject is first person or second person or third person plural, so in that case we need to use root form. तो हमें आई, वी और यू, दे और किसी भी एक से ज्यादा नेम के साथ हमें रूट फॉर्म लगानी है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है. ही, शी, इट और कोई एक नेम. ही, शी, इट और कोई एक नेम कहलाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की पहली फॉर्म जिसके साथ एस या ई एस लगता है, राइट? नेगेटिव सेंटेंस: I, we, you, they. All other plural subjects do not root from the verb. So if our sentence is negative, then we need to use do not. And with the do not and does not, we should use root from the verb. जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमें डू नोट या डज नोट लगाना है, और डू नोट और डज नोट के साथ हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म आती है. अब हमें समझना है कि डू नोट कहां लगाना है, डज नोट कहां लगाना है. इफ आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, means he, she, it, or with any one name, we should use does. And with the rest of subject like I, we, you, they, other plural subjects, we should use do not, right? I, we, you, they और एक से ज्यादा नेम्स के साथ हमें डू नोट लगाना है, ही, शी, इट और कोई एक नेम के साथ हमें डस नोट लगाना है. उसके बाद ध्यान रखना है कि हमें डू और डस के बाद हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म लिखनी होती है, right? Some examples are written here. I do not go to school by bus. I, that is the first person singular. We need to use do, then not, then a root form, then rest of things. He does not live near my house. Third person singular, does not, root form. Mona does not have any new pair of jeans. So Mona is a name, that is third person singular. Does not, then root form, right? So this is a formation. Short forms: do not is shortened as don't. Does not is shortened as doesn't.
तो डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोंट, और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट। तो डोंट और डजंट भी बोल सकते हैं इनको। Yes, no questions. Do, I, we, you, they, all, other plural subjects, does, he, she, it, all the singular subjects. अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो हमें सबसे पहले डू या डज लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी शुड डू एंड वेयर वी शुड डज। हमें समझना है कि डू कहाँ यूज करना है, डज कहाँ यूज करना है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट कोई और एक नेम हो, तो हमें डज यूज करना है, बाकी सभी के साथ डू यूज करना है, राइट। लाइक do they go to school on Sundays? Does Mona have any new pair of jeans? So we have used here do or does according to subject. Question beginning with a question word like what, why, when, how, whose, whom. Question word do, does, subject, root from the verb. Why do you keep the window closed? Where does Vinod live? So if our question is with the wh word, so first of all we should use wh word, then helping verb, then subject, then root form the verb, then rest of things. अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाला है और वो wh वर्ड से क्वेश्चन वाला है, तो सबसे पहले हमें wh वर्ड लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें रूट फॉर्म लिखनी है, राइट। लाइक व्हाई डू यू कीप द विंडो क्लोज्ड, वेयर डज विनोद लिव, right? Simple present tense uses. Now we have to understand in which condition we should use simple present tense. This tense expresses actions done as a matter of habit or actions done repeatedly. It talks about actions in a general way. He usually gets up late in the morning. तो हमें ये जो टेंस यूज करना होता है ऐसे एक्शंस के लिए यूज करना होता है, ऐसी बातों के लिए यूज करना होता है जो हमारी हैबिट का पार्ट हो, जो काम बार बार करते हैं। जैसे आप कहते हो कि मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो वो काम उठने का आप हर रोज करते हो, एक अपनी हैबिट को बता रहे हो कि मेरा उठने का काम कितने बजे है, 6 बजे है। तो इस तरह की बातों के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। He usually gets up late in the morning. The peon rings the bell at the end of every period. I meet him at the bus stop every day. Children ask interesting questions. तो हम इस तरह के सेंटेंस की बात करें तो जनरली हम करते हैं, अक्सर करते हैं, बार बार करते हैं, वो करना हमारी हैबिट का पार्ट है। तो उन एक्शंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करें, ऐसी सेंटेंस, ऐसे एक्शन जो ये बताएं कि कोई काम हमेशा सच होता है, वैसा होने पे वैसा ही होता है, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। लाइक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो अर्थ है सन के राउंड घूमती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हमेशा सच होती हूं, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इट एक्सप्रेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने हो तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। लाइक ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक, द पेंडा ईट्स bamboo shoots and leaves, कुनैन टेस्ट्स बीटर। सो जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करना हो तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस सिचुएशंस states true at the time of speaking. She goes to dance class once in a week. We often clean our house on Sundays. तो ऐसे एक्शन जो हम हर रोज नहीं करते परंतु एक फिक्स पीरियड पे करते हैं, बार बार करते हैं, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे शी गोज टू डांस क्लास वंस इन अ वीक, किसी की बात कर रहे हैं कि वो एक वीक में एक बार डांस क्लास जाती है। वी ओफन क्लीन आवर हाउस ऑन संडे, संडे को अपने हाउस हम क्लीन करते हैं। तो ये काम हम रोज नहीं करते परंतु अक्सर करते हैं, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नोट, we often use words like usually, generally, every day, always, never, often, sometime with this tense. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड से हमें पता लगता है कि हमें इस टेंस की हम बात कर रहे हैं, हमें ये टेंस यूज करना है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, सो यूजुअली वी यूज दीज वर्ड्स,
So if you find these words in any sentence, so you need to understand that we are going to use simple present tense in this sentence, right? So on the behalf of this understanding, you need to fill the exercise number 1. Speak out these sentences using the subject given in the brackets. Make other changes where necessary for oral practice. We go for swimming twice a week. Gaurav. Gaurav goes for swimming twice a week. So, dear students, we have to change the subject in these sentences. Then, according to subject, we should use the right form of the verb. Like first sentence I tell you, then rest of sentence you have to do by yourself. His uncle's export garments to Middle East. So we need to say Sunil's father exports. We need to say that exports because we are talking about one person, Sunil's father. So according to subject, we need to fill the verb. So you have to do this exercise by yourself. Second exercise, speak out these sentences changing the subject from plural to singular and make other necessary changes. जो हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं सेंटेंस में उनको चेंज करना है, वो प्लूरल है तो उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है और उसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करनी है. लाइक सोल्जर्स डिफेंड द ओनर ऑफ द कंट्री. वी नीड टू से दिस सेंटेंस सोल्जर डिफेंड्स. वी नीड टू से डिफेंड्स, not defend, right? According to subject, we need to use here verb. So this exercise you have to do. Come on the exercise number 3. Speak out these sentences in the negative form for oral practice. You need to make these sentences in negative form, like they pay the bills in time. What is the negative sentence of this? They do not pay the bills in time. They do not pay the bills in time. So you have to do by yourselves. Come on the exercise number 4. Speak out these sentences in the interrogative form for oral practice. So these are the sentences. You need to say these sentences in interrogative form, like these reporters cover only school events. So how will you say this sentence in in interrogative form? Do these reporters cover only school events? Do these reporters? So you need to make the interrogative sentences of these sentences. Exercise number 5. Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. So some verbs are there in the brackets. You need to fill the right form of that. Like snow dash on the mountains. Snow falls, not falls. Falls. So you need to fill the right form of the verb here. Exercise number 6. Using the question words given in the brackets, frame questions to which the following may be suitable answer. The baker sells bread and biscuits. What? What does baker sell? So what are the questions words? You need to use those questions word and you need to make a new sentence that should be interrogative. Come on the exercise number 7. Rewrite the flowing passage using the simple present tense of the verb given in the brackets. So you need to write this passage once again and you need to use the right verb. So you have to do this exercise by yourself. Come on the next tense, simple past tense. Okay, simple past tense. Simple past tense. Abhijit sang well. We bought new books. The moon shone brightly. The verbs in these sentences are in simple past tense. So dear students, now you can see that some verbs are written here which are in the bold letters. So these verbs are of simple past tense. Means we have used a second form. So whenever we use the second form of the verb, so it means we are using their simple past tense. Positive statements and negative statements. These are the positive statements. Simple past tense of the verb with all subjects. Subject did not root from the verb. Abhijit did not sing well. The moon did not shine brightly.
Short form did not is shortened as didn't. So short form of did not is didn't. Now you can see here that is a short form of did not, didn't, that is called didn't. Yes or no question. Did subject root from the verb. Did you attend the concert? Did Abhijit sing well? Questions beginning with question word, did subject root from the verb, question words, the verb, when did the concert start, how did Abhijit perform. So dear students, here we have to understand when we are talking about the simple past tense. So for the positive sentence, means for the simple sentence, first of all we need to use subject, then second form of the verb. अगर हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करने वाले हैं या करने जा रहे हैं तो हमें पहले सब्जेक्ट यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. And if we need to use negative sentence, so first of all we will use subject, then did not, then root form of the verb. Always remember with the do, does and did. Do, does and did we need to use always with them root form of the verb. हमें do, does और did के साथ हमेशा verb की root form ही प्रयोग करनी होती है. Right? If our sentence is positive, we need to use second form of the verb. If our sentence is negative or interrogative, we need to use root form with the did. Right? Simple past tense uses. The simple past tense is used to express actions that took place at some point of time in past and are over now. जब past में हमने कोई काम किया उसके लिए हम simple past tense use करते हैं. Like I joined this school last month. She received this letter yesterday. मैंने ये स्कूल लास्ट मंथ ज्वाइन किया था. करने का काम मैंने ज्वाइन करने का काम मैंने पास्ट में किया तो उसके लिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज कर दिया. उसने उसको ये लेटर कल मिला था, यानी अब से पहले कोई काम हुआ, उसके लिए सिंपल पास्ट. तो हमने अब से पहले यानी प्रेजेंट से पहले कोई काम किया उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए. सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. हमें अपनी पास्ट की हैबिट को डिफाइन करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए. राइट? लाइक आई यूजुअली वेंट होम ऑन संडेज. तो मैं पास्ट की हैबिट बता रहा हूं कि मैं संडे को अपने घर जाया करता था. राइट? ये मेरी हैबिट थी कि मैं संडे को जाता था अपने घर. तो व्हेन वी हैव टू डिफाइन आवर पास्ट हैबिट, इन दैट केस आल्सो वी शुड यूज सिंपल पास्ट टेंस. It is also used to express actions that began and ended in the past. I spent my childhood at Dehradun. I lived at Dehradun from 2004 to 2009. तो जब हमें कुछ ऐसे एक्शंस को बताना हो जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में खत्म हो गए तो उनके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे. Note, when we express some past habit, we often use words like usually, generally, every day, always, never, often, sometime with the simple past tense. So here we have to understand when we use simple past tense and we want to define our past habit. So generally these words are used there. Forms of the verb. So dear students, these are the forms of the verb. First form is called present form, second form is called past form, and third form is called past participle form. Present form, past participle form. हम इनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. इनको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं. Like act is first form, acted is second form, or acted is third form. And we can say present form act, past form acted, and past participle form acted. So you need to learn these verbs, right? Please wait. So you have to learn these verbs. All the verbs you have to learn. Means you need to learn the second form of verb, third form of the verb. What are the meanings of these verbs, right? So on the behalf of this understanding, you need to do the exercise number 1. Give the past and past participle form of these verbs for oral practice. You need to write the past form and past participle form. Right? Like beat is here, beat, beat, beaten. Beat is first form, that is also called present form. Beat is second form. Beaten is third form. So you need to write the second and third form.
Come on the exercise number 2, fill in the blanks with the past tense of the verbs given in the brackets. So some verbs are written in the brackets. You need to write the second form of the verb because you need to use second means past tense here. Water freeze. So what is the second form? Water froze in the taps. So you need to use second form. Exercise number 3. Rewrite these sentences in the negative form for oral practice. Sushant knew the correct answer. So you need to use the negative sentence. Sushant did not know. Did not know because after did we should use root form of the verb. She gave a frank opinion. She did not give a frank opinion. Right? So come on the next exercise. Rewrite these sentences in the interrogative form. You need to make these sentences in interrogative form like she heard the crisis of a child. Did she hear? Did she hear? Because we need to use root form after did. If we find did helping verb in any sentence, so we should use root form of the verb, right? Exercise number 5. Using the question words given in the brackets, frame questions to which the following may be suitable answers. Raman reached here in the morning. When? When did Raman reach here? So you need to use these WH words and you need to make interrogative sentence. Next exercise. Complete this dialogue with the simple past tense of the verb given in. Like Sruchi, ma'am, who, dash, Raja Ram Mohan Roy and what, dash for India. Ma'am, who was? You need to use second form and we need to use here first fill up, that is be. The second form of be is was or were. We are talking about a one person, so that's why we will use here was. Who was Raja Ram Mohan Roy and what he did, because we need to use second form what he did for India, right? So in this way you need to write this sentence, is all the sentences.